municipal administration and urban development, labor and employment administration of religious endowments, forest, science, technology and environment, administration of justice, energy, school education, higher education and technical education, sir. Sir, industry business friendly policies and the proactive measures taken by the government to facilitate business have created a conducive environment that has spurred industrial growth in the state. In the year 2022-23, the industrial sector contributed to the gross state value of added GSVA as the current prices is estimated at 19%. Sir. The state has made continuous efforts for the growth of the industrial sector through its innovative policies which have resulted in increased investment and employment opportunities. TS iPass, the government's flagship initiative, has attracted rupees 20,237 crores of investment in the year 22-23, sir, up to Jan 23. Through 2,518 new industries and created employment for 72,908 people, sir. Sir, innovation and technology are the prime drivers of industrial growth in Telangana. Currently, the state has 78 incubators, accelerators, and co-working spaces with a space focus on life sciences, fintech, agri-tech, digital science, etc. The innovation policy of the state and incentives provided to the startups have made the state a fertile ground for many emerging startups. And some of them have gone on to gain national prominence too, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, a startup named Darwin Box is the first startup from Telangana that joined the Unicorn Club, and another startup, Skyroot Aerospace, incubated at T-Hub, has gained the distinguished status of developing India's first private rocket called Prarambh. So T-Hub has bagged the Best Incubator in India award at the National Startup Award 2022 of the DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, for this effort to support the growth of the startup ecosystem in Telangana, sir. And I think it's an achievement for the Telangana state, and it is really showing as to what has been the achievements. The second phase of T-Hub 2.0 was started on 28 June 2022. It is one of the world's largest innovation campuses with a capacity to house 4,000 startups and other key elements of the innovation ecosystem. T-Hub Phase 2 has further improved the startup ecosystem of the state, sir. Sir, now going on TS Prime for the minority entrepreneurs, sir. Soon after the formation of Telangana state in the year 2014, the government announced industrial incentives scheme T-Idea for the general category of entrepreneurs and T-Pride, Telangana state program for rapid incubation of Dalit entrepreneurs. Responding to the demand made by AIMM, Chief Minister Saab, KCR Saab had announced that T-Prime Telangana state for rapid incubation for minorities will also be taken up. However, till now this scheme has remained a non-starter. Sir, through you I request the government to implement this scheme by fixing annual targets and conducting camps for identification of potential entrepreneurs among minority youth. Information technology, electronics and communications, sir. The state has set up T-Hub and V-Hub for promoting the young entrepreneurs and women entrepreneurs, sir. Sir, I would request the IT Minister Saab to set up a T-Hub and V-Hub unit in southern part of Hyderabad too, sir. So we also welcome the development of IT cluster towers at Kompalli, Kollur, Usman Sagar, Shamshabad, Uppal, Pocharam and
also in other HMDA areas, sir. Sir, I thank the government for taking up the IT tower with an estimate cost of 1,030 crore in public-private partnership in mode also coming up at 10.35 acre land behind L&T Mall at Malakpet in the southern part of Hyderabad. This project has been sanctioned on the representation made by AIMIM, and I hope that KTR Saab would lay the foundation stone at the earliest, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, going on the municipal administration and urban development, sir, I compliment the Municipal Administration Minister, Janab K.T. Ramarao Sahab, for record allocation of 11,082 crores for the municipal administration and urban development demands. The MAUD department now looks after 142 urban local bodies in the state, including the GHMC as well as the urban development authorities and other wing of MA and UD, sir. So at the time of formation of Telangana state in June 2014, there were only 52 municipalities and 6 municipal corporations in the state. Today there are 13 municipal corporations and 125 municipalities across the state. Without going into the specific, I would like to confine myself to broader issues. Of the total allocation of 11,082 crores, rupees 2,517.92 crores have been earmarked for Commissioner and Director of Municipal Administration. Rupees 1,476.95 crores for Telangana Urban Finance and Infrastructure Development Corporation. Rupees 1,061.84 crores for Public Health Engineering. Rupees 13.43 crores for Director of Town and Country Planning. And rupees 25.59 crores for MEPMA. Though the GHMC accounts for a population of over 1 crore now, the budgetary allocation for this premier municipal body is only rupees 182.38 crores, which works out to 1.64% of the total allocation of MA and UD. So also the Department of Kuli Qutub Shah Urban Development Authority is allocated only rupees 12 crores. HMDA is provided with rupees 210.10 crores, sir. Other allocation including rupees 1,960.70 crore for HMWS and SB, 2,472.35 crores for Hyderabad Metro Rail, rupees 200 crore for Musi River Farm Development, rupees 200 crores for Yadgiri Gutta Temple Development Authority, and 50 crores for Vemulavada Temple Area Development Authorities. To ensure planned development of urban areas, the Telangana government has taken up Patana Pragati program. The allocations are made for construction of integrated veg and non-veg market, garbage, dump yard, plant nurseries, public toilets, as well as cremation and burial grounds. Sir, coming now to GHMC, sir. As the premier civic body of Telangana state's capital, GHMC is spread over 625 square kilometers area with over 1 crore inhabitants. So, however, for many years now, GHMC have been facing resource crunch since the government grants and compensations have been far less than what it had been expecting from the government. So the result is that the GHMC actual budgetary expenditure have been hovering from rupees 3,600 crores to rupees 4,000 crores in the last few years, as there has been a huge shortfall in realizing the ambitious revenue targets, including the grants from the state government. Since 2018 and 19, the GHMC have been raising funds to meet its capital expenditure requirements. So GHMC has been virtually left to take care of itself, and it has to raise funds through municipal bonds and loans for financing the SRDP and other capital works.
Thus, the GHMC is taking time to complete the constructions of flyovers, road widening works, skyways, footover bridges, model markets, Charminar pedestrianization project, and other development works in the core city area of Hyderabad and Secunderabad due to the resource crunch. So the allocation of rupees 182.38 crores made to the GHMC is much less than what the GHMC has sought from the government in the state budget. So the GHMC's main source of revenues are property tax, trade, license fees, building permits fees. The GHMC is not getting its due share from the state government toward the non-plan and plan grants, property tax on state property, share of motor vehicle tax, VAT and other assigned revenues such as professional tax. GHMC's own revenues are not enough to fund the establishment, expenditure and maintenance of civic amenities under its jurisdiction. So GHMC has to fund comprehensive road management program CRMP and strategic road development program SRDP, strategic Nala development programs and stormwater drains, Harita Aram, Basti Dawakhana, community halls and public toilets. So if this is not only the state of GHMC, sir, but other municipalities also of the states are facing similar problems, sir. So through you, Honorable Deputy Speaker, sir, I request the government to kindly make good allocations, not only for the GHMC, but all the municipalities in the state of Telangana, sir. Sir, Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board also, sir, the allocation of rupees 1,960.70 crores for HMWSSB includes loan assistance of rupees 1,660.70 crores for its capital work and grants of rupees 300 crores for the 20 KL free water supply scheme, Sunkashila intake project for Krishna drinking water supply projects for the Hyderabad gets rupees 735 crores extension of water supply and sewerage services to settlements up to ORR limit is provided rupees 635.70 crore and other development works get rupees 300 crores by way of loans. Honorable Deputy Speaker, sir, however, I may point out that HMWSSB has been seeking assistance from the state government for the maintenance of work of water supply and sewerage network and for paying the power bills for pumping the water over long distance from Nagarjuna Sagar or River Krishna and Yelampari barrage on River Godavari. The result is that the Hyderabad HMWSSB has no fund for maintenance of work of the drainage and water supply lines and even for changing the manhole covers in the city areas. So the HMD has been given rupees 210.10 crore toward loans for repaying the loans of Outer Ring Road and grants of rupees 10 crores for land pulling and only rupees 10 lakh for taking up developmental activities. And no allocation is made for regional ring road projects, sir. Now, going further, sir, about Hyderabad Metro Rail, sir. Hyderabad Metro Rail gets rupees 1,500 crore by way of loans, rupees 377.50 crore for land acquisition for airport metro connectivity, rupees 50 crores for multi-model suburban rail transport system MMTS, and rupees 500 crores for metro connectivity in the old cities. Sir, we have been requesting and demanding to the government for taking up the old city metro. Still it is pending. I have been repeatedly making the demand for initiating the work for the old city metro, sir. Once again, I make the same request and the same demand. At least road widening work can be started for the metro train. I hope the government would make a note of my request and the demand and consider my demand, sir. Sir, in the current budget too, the metro rail is allotted funds for old city connectivity. 5-kilometer stretch from Imliban to Falaknuma has been held up for various reasons, including presence of large number of religious
and other heritage structures, sir. Sir, it is estimated that completion of this stretch needs rupees 2,000 crores, including rupees 500 crores for creation of right-of-way, that is land acquisition, road widening, utility shifting, etc., and rupees 1,500 crore as the construction cost. The budgetary allocation for this stretch is rupees 500 crores in the next year's budget, sir. I hope and trust the municipal administration department would accord top priority to this long pending work by asking the concessionaires to expeditiously complete the work under the engineering, procurement, construction mode. Currently, the LIDR survey work is in progress to identify the underground utilities without digging the roads, sir. So now going further ahead, on Kayi Uthaye Sawal Urban Development Authority, sir, I would like to recall and say that the Kayi Uthaye Sawal Urban Development Authority came into existence on the demand of MIM, and the main purpose of Kayi Uthaye Sawal Urban Development Authority was to develop the old part of Hyderabad, sir. So for Kayi Uthaye Sawal Urban Development Authority, assistance of rupees 12 crores is provided in the 23-24 budget. The grant is sufficient only for payment of salaries of staff and for minor heritage restoration works, sir. Sir, I may recall that Kayi Uthaye Sawal has been entrusted the work of Lad Bazaar and Pattargatti pedestrianization, restoration of Sardar Mahal, Murgi Chowk, Miralam Mandi, Miralam Tank, and other heritage structures, sir. These works are estimated to cost more than 500 crores, and the funds are to be provided for this work to Kayi Uthaye Sawal Urban Development Authority, sir. Sir, as the Ramzan is set to begin in few weeks, through you, I request the Municipal Administration Minister Saab to ensure the civic agencies are geared up to ensure a proper water supply, maintenance of sewerage network, and clearance of garbage, not only GHMC area, but also in other municipal corporations and municipalities, sir. Sir, I may point out that almost 90% of Muslim population in this Telangana state is concentrated in urban areas, with 60% of urbanized Muslim living in GHMC areas, sir. So through you, I would like to thank the Honorable Minister, Mr. K.T. Ramarao Sahab, for having a meeting few days ago, and we have had a discussion about the issues relating to old city development, about the road widenings which have been pending from so many years, and also the works which are to be speeded up. जो काम को, जिस काम में तेजी पैदा करनी है, SRDP में फेज 1 में उस ताल्लुक से भी हमारी बात हुई, और फिर हमने मुतालबा किया था कि SRDP फेज 2 में भी जितनी सारी रोडें हैं और कौन से SRDP 2 में कौन से फ्लाईओवर्स को लेना है, इसके लिए हमने पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। मैं उम्मीद करूंगा कि मिनिस्टर साहब अपने जवाब में वो सारे जो हमारी मीटिंग में जो बात हुई और मंजूरियां हुई उसका जिक्र व तस्करा करें, क्योंकि काफी काम मंजूर हुआ है। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है और मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि फेज 2 में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरियां मिली हैं। ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन के पास एक फ्लाईओवर का आम लेफ्ट साइड टुवर्ड संतोष नगर का, उसकी मंजूरी दी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर उसके बाद में हाफिज बाबा नगर के पास में फ्लाईओवर को चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर से मिलाने के लिए मंजूरी दी गई, इसके लिए भी मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर बल्लागुड़े में वहां पर भी एक और फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई है, और उसके आगे फिर
राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आता है एरिया, ओल्ड सिटी को भी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी लगता है, महफिल होटल के पास, वहां पर भी फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई है, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और काफी तफसील के साथ हमारी बातचीत में हमने चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की, और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कामयाबी के साथ अगर हमको करना है उसको, तो सबसे पहले हुकूमत की और अवामी नुमाइंदों की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम जो पुराने शहर का वो इकोनॉमिक जोन है, हम कोशिश ये करें कि जितने लोगों का लाइवलीहुड, जितने लोगों की रोजी रोटी वहां पर जुड़ी हुई है, उस रोजी रोटी को बरकरार रखते हुए चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कामयाब करें। तो उसके लिए हमने तजवीज रखी थी 2 साल पहले, जिसका इंस्पेक्शन भी हुआ और फैसला यह लिया गया कि मूसी के सामने, मूसी के ऊपर सालारजंग म्यूजियम के सामने एक ब्रिज और नए पुल के बाजू में एक ब्रिज और पुराने पुल के पास भी एक ब्रिज बनाते हैं, और वो ब्रिज पर ये सारे जो छोटे कारोबार करने वाले हॉकर्स है या डब्बे वाले हैं या बंडी वाले हैं, उनको वहां पे रिलोकेट करेंगे और उनको जीएचएमसी का या एचएमडीए का जो भी वो जो प्रोजेक्ट लेती है उनका किराएदार बनाएंगे, उनसे किराया लेकर उनको वहां पे रखेंगे। क्योंकि सालारजंग म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं, उनके जरिए हम उन छोटे मोटे कारोबार को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी पूरी ड्राइंग्स बनाई गई, तफसीलात आई, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का, केटी रामाराव साहब का, कि उन्होंने उसकी भी मंजूरी दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप वक्त देंगे और हम इन कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। और न सिर्फ ये ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, उसके साथ ही साथ चार मीनार बस स्टॉप जो पुराना है, वहां पे मुसलसल हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कि चार मीनार को देखने के लिए जो टूरिस्ट आएगा उनके पार्किंग लॉट के लिए, तो उसकी भी मंजूरी दी गई है। इंशाल्लाह उसका भी बहुत जल्द एक फाउंडेशन स्टोन लेइंग का वक्त मिनिस्टर साहब देंगे, तो वो भी रखा जाएगा, और उस पार्किंग लॉट में थोड़ा सा स्पेस कमर्शियल एक्टिविटीज को भी दिया जाएगा, और जो लोग जो मुतासिर हो रहे हैं पेडेस्ट्रियनाइजेशन के प्रोजेक्ट की वजह से, उनको भी वहां पे अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मीरालम मंडी को बनाने की मंजूरी भी हासिल हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मीरालम तालाब पर भी एक ब्रिज डालने का जो एस्टीमेट और प्रोजेक्ट बनाया गया, पूरा मीरालम तालाब को डेवलप करने का, उसका काम भी आगाज होगा, इंशाअल्लाह वो भी पूरा होगा। और एक बात भी कि हमने बहादुरपुरे के फ्लाईओवर के बाद और एक्सटेंड करते हुए फ्लाईओवर को आरामगढ़ तक भी ले जा रहे हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी तेजी पैदा कर कोशिश ये करने की हमने अपील की है मिनिस्टर साहब से कि जुलाई अगस्त तक जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो सकते हैं उनको मुकम्मल करवाएं, और फिर बहादुरपुरे से आरामगढ़ और फिर ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर फिर आरामगढ़ तक एक कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से फ्लाईओवर है, तो नीचे से भी डेवलपमेंट करने के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने पूरा प्लान जो था उसको देखा है। ऑलरेडी प्लान हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, जहां नीचे गार्डन्स होंगे, वॉकवेज होंगे, लोगों को तफरीह के लिए, बैठने के लिए, वॉकिंग के लिए भी स्पेसेस क्रिएट किए जाएंगी। तो मैंने हमारी पार्टी की जानिब से एक रिक्वेस्ट हुकूमत से की थी, और वो रिक्वेस्ट ये थी कि आप ये फ्लाईओवर्स के नीचे एक डेडिकेटेड लेन दे दीजिए फॉर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। I hope that the government would make a note of this bus rapid transit system, which we have made a request. Anyhow, we are creating a corridors of bus rapid transit system. Lane, dedicated lane can also be included in that, so that के पुराने शहर के लोग वो BRTS के जरिए तेजी से जाएंगे, और मैं समझूंगा कि शहर हैदराबाद में सबसे पहले बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ओल्ड सिटी में आएगी।
تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور پھر ہم نے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ میں ہی ایک اور مطالبہ کیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد میٹرو ٹرین کی جانب سے اور ان کو لینڈ بھی حوالے کی گئی تھی. جو اولڈ میونسپل آفس قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ بورڈ کا جو آفس ہے, وہاں پر بھی ایک پارکنگ لاٹ اور ایک کمرشل کمپلیکس بنایا جا سکتا ہے جو کہ رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم وہاں پہ لائیں گے تو حیدرآباد میٹرو ٹرین جو آ رہی ہے وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی اولڈ سٹی میں اگر میٹرو ٹرین لینا چاہتا ہے تو ان کو وہاں پر بھی قلی قطب شاہ میں گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے پارکنگ لاٹ اور پارکنگ سپیس بھی ملے گا, کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوگی, اور وہ ایریا جو خالی ہے اس پہ ہم ڈیولپمنٹ بھی لا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سارے مطالبات رکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میٹنگ میں اس بات پر زیادہ توجہ دی گئی کہ پرانے شہر کو بھی نئے شہر کی طرح ترقی یافتہ اور پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق نہ ہو ویسا ڈیولپمنٹ لانے کا منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے. اور مجھے یقین ہے, اسی وجہ سے اس یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جو ہم میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں اگر وہ کام ہو جائیں گے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق رہے گا. پھر پرانی روڈ وائڈنگز تھی, 48 روڈز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں برسوں سے روڈ وائڈنگ کے لیے. وہ 48 روڈز کے وائڈنگ کے لیے بھی منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے, اور انکمپلیٹ جو روڈز ہیں ان کو پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا, اور پریورٹی کے حساب میں ہم نے فہرست دی ہے کہ ان روڈوں کو لے لیا جائے. تو ان روڈوں کو بھی لینے کا منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جب وہ 48 روڈز اولڈ سٹی کے وائڈن ہو جائیں گے تو اولڈ سٹی میں اور بہت ترقی آئے گی. اور میں جب یہ روڈ وائڈنگ کی بات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس دن میٹنگ میں اس بات پر بھی توجہ دی کہ روڈ وائڈنگ جب ہو ہی رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بس بیز یا بس سٹاپس کو بھی ہم اولڈ سٹی میں بنائیں, شیلٹرز بنائیں, بس شیلٹر, کیونکہ وہاں پر نہیں ہیں. تو اس کے اوپر بھی منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ اس تعلق سے بھی پورا غور کریں گے. اور پھر ہم نے پرانے شہر کے 2 بیڈروم ہاؤسز کے تعلق سے بھی اس میٹنگ میں ذکر کیا, اور کانٹریکٹرز کے بلز پینڈنگ ہے. فلک نما میں جو 2 بیڈروم بن رہا ہے, اور جنگم میٹ میں اور بلا گڑے میں جو بن رہا ہے. جنگم میٹ میں 2 بیڈروم ہاؤسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب ٹائم دیں گے تو ہم اس کا بھی اسی دن لوگوں کو حوالے کر جو بھی ہے حوالے کر پوزیشن ان کو دے سکتے ہیں وہاں پہ. اس تعلق سے بھی بات ہوئی میٹنگ میں, اور ساتھ ساتھ ہم نے پرانے شہر کے سیوریج سسٹم اور پانی کے مسائل کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی, کیونکہ میرا ایریا ٹیل اینڈ ایریا ہے چندرائن گٹے کا سٹی لیمٹس میں, تو ہم نے اس تعلق سے بھی بات کی ہے. اور پھر جو پرانے شہر میں جو لال دروازے کا ایریا ہے, پاروتی نگر اور دوسرا ایریاز ہے جہاں پہ ہمارے ہندو بھائیوں کی پاپولیشن ہے, اس کے لیے بھی ہم نے 3 پانی کی ٹاکیوں کے لیے ایک ریکویزیشن دیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے کے ٹی راما راؤ صاحب اس تعلق سے بھی ضرور غور کریں گے. جیسا پھول باغ چمن علی آباد پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے, مہاکالی ٹیمپل اپگڑا کے پاس میں ایک پانی کی ٹاکی بنانے کا مطالبہ کیا, اور گولی پورا مارکیٹ میں بھی ایک پانی کی ٹاکی جس کے لیے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ضرور اس کو بھی منظوری دیں گے. تو میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میرالم تالاب کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ میں ہم نے اس میٹنگ میں مطالبہ کیا تھا منسٹر صاحب سے کہ ہمارے پاس میری کانسٹنسی میں 3 تالاب ہے, ایک گرم چیرو تالاب ہے, ایک سرم چیرو تالاب ہے, اور ایک اویسی ہاسپٹل کے پاس میں تالاب ہے. تو اس کے لیے بھی میں منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ زیادہ پیسہ نہیں, آپ تھوڑا ہی پیسہ دے کے صرف بینچز
اور تھوڑا بند وہاں پہ بنا دیجئے, تھوڑے لائٹس لگا دیجئے تاکہ لوگ واکنگ کر سکتے ہیں. اگر فاؤنٹین لگ جاتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے. ایک خوبصورتی آئے گی, کیونکہ پرانے شہر کے لوگوں کو ریکریشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے ہمارے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ جن جن تالابوں کا ایف ٹی ایل فکس ہو چکا ہے, ایف ٹی ایل کے باہر بھی جگہ ہے, تو اس باہر جگہ پر ایس ٹی پی لگانے کا ہم نے مطالبہ کیا ہے. تو آپ ایس ٹی پیز وہاں پر بھی لگائیے. اکبر نگر مرکی نالہ میں بھی کام مکمل ہوا ہے, اور مرکی نالہ میں P9 3-4 جگہ پہ کام چھوڑ دیا گیا ہے سیوریج کا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو بھی کمپلیٹ کریں. اور وہ بڑا نالہ, آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا کہ پورے شہر میں اگر مرکی نالے کا کام ہوا ہے تو وہ میری کانسٹیٹنسی میں ہوا ہے. اور جو مرکی نالہ ہے, کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا نالہ ہے کہ 350 فیٹ کا لمبا نالہ ہے. ہم نے انکروچمنٹس کو روکا ہے اس میں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے ہم نے ڈیمارکیشن کیا اور مرکی نالے کا کام کیا ہے, اسی طریقے سے میری کانسٹیٹنسی اور مہیشورم کانسٹیٹنسی میں ایک نالہ آتا ہے جس کا نام فرنگی نالہ ہے. فرنگی نالے کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے, اور ہم کو اس فرنگی نالے کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ انکروچمنٹس ہو رہے ہیں. اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کے گھروں میں پانی آ جائے گا اور برسات میں ان کو پرابلم ہوگا. تو ایس ٹی پیز کے تعلق سے کہا, پھر بارکس, سلالہ, بلہ گڑے میں سیوریج سسٹم نہیں ہے, تو ہم نے مطالبہ کیا کہ سیوریج اور جو واٹر لائنز نہیں ہیں اس کے لیے بھی ایک ایسٹیمیٹ بنایا جا رہا ہے. شاید وہ قریب 500 کروڑ کا ایک ایسٹیمیٹ ہے جو 7-8 سال لگیں گے اس کو ختم ہونے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھی آپ ایڈمنسٹریٹو سینکشن دیں گے. اور دوسرے بھی کام ہم نے اس میٹنگ میں ڈسکس کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس تعلق سے بھی آپ منظوری دیں گے. جیسا روڈ وائڈنگ ہے بنگلور ہائی وے ٹو شاستری پورم جنکشن, روڈ وائڈنگ آف شاستری پورم جنکشن ٹو انجن باولی, روڈ وائڈنگ آف بلہ گوڑا جنکشن ٹو سری سیلم, اور روڈ وائڈنگ آف بنگلور ہائی وے ٹو شاستری پورم جنکشن, روڈ وائڈنگ فرام شاستری پورم جنکشن ٹو انجن باولی. سر اس کے بعد میں اس میٹنگ میں اور ایک منظوری دی گئی کہ ریتی بولی سے ٹولی چوکی تک بھی جو فلائی اوور آلریڈی منظور ہو چکا تھا, ٹینڈر ہو چکا تھا, لیکن روک دیا گیا تھا, اس کا کام بھی سٹارٹ کرنے کا ہے. تو میں منسٹر صاحب سے کہوں گا جب آپ اولڈ سٹی کو آئیں گے تو اس کا بھی وقت دیجئے, ہم اس کا بھی فاؤنڈیشن سٹون رکھتے ہیں. اور ایک کنسٹرکشن آف 2.5 ml ELSR ایٹ بلہ گوڑا, providing inlet and outlet distribution network including pumping arrangements to the new 2.5 ml ELSR at بلہ گوڑا, اس کی بھی منظوری کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور laying of sewerage line near DMRL areas of Santosh Nagar cross road under Chandrayaan Gutta constituency, یہ بھی ہم پوری تفصیل دے چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی دیکھیں گے. کئی مسائل پر گفتگو ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے پرانا شہر میں یہ ترقیاتی کام ہوں گے. میں پھر سے کہوں گا کہ پرانے شہر کا سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ روڈ وائڈنگ کا ہے, چار مینار پیرسٹنائزیشن کے پروجیکٹ کے کمپلیشن کا ہے, جو الحمدللہ منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے. اور مجھے اطلاع ملی آج ہی کہ 150 کروڑ روپے پرانے شہر کی روڈ وائڈنگ کے لیے GHMC کو دے دیے گئے ہیں اور چیکس ریڈی ہو رہے ہیں اور روڈ وائڈنگ کا کام تیزی کے ساتھ مکمل ہوگا. میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی کی وجہ سے آج یہ کام ہو رہا ہے. اور موزم جائی مارکیٹ جس طریقے سے خوبصورت بنی ہے, ہمیں امید ہے کہ چوک کی مارکیٹ بھی اسی طریقے سے خوبصورت بنے گی. ہمیں امید ہے کہ میرالم منڈی بھی اسی طریقے سے خوبصورت بنے گی. آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر, اس کے ساتھ میں ایک اہم مسئلہ آپ کے ذریعے منسٹر صاحب تک لانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے ریمکی کو ذمہ داری دی گئی. تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ پلیز آپ کنسیڈر کریے شہر کے نالوں اور سیوریج کی وہ جو اسٹرام واٹر ڈرین کی صفائی کا جو کانٹریکٹ دیتے ہیں,
ऐसा ही रैमकी की तरह क्या हम एक एजेंसी को दे सकते हैं क्या? जैसा आपने पूरे रोड सीआरएमपी में पूरे रोड्स मेंटेनेंस आपने दे दिया है 5 साल 6 साल के लिए, वैसे ही क्या हम पूरे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की क्लीनिंग भी क्या एक एजेंसी को दे सकते हैं? क्योंकि उसमें हो यह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो अलॉट हो रहा है लेकिन सफाई नहीं हो रही है और वो बिल क्लियर हो जाता है और कचरा वैसे ही पड़ा रहता है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंसिडर करिए। और एक मैं ये चाहूंगा कि आपने जीएचएमसी 5250 स्वच्छ ऑटोज लिए थे 6 बरस में, और मुझे शायद मैं गलत हूं लेकिन मुझे पता चला कि 1800 ऑटोज लापता हैं, पता ही नहीं है, वो एंट्री नहीं हो रहा है वहां पे। इसकी वजह से काफी कचरे का अंबार शहर में लग रहा है। बिन फ्री सिटी बनाया आपने लेकिन लोग लाकर कचरा फेंक रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो पॉइंट्स पर कचरा फेंका जा रहा है एटलीस्ट एक सीसीटीवी कैमरास लगाना चाहिए, उसमें पिक्चर आनी चाहिए और कचरा फेंकने वाले को कुछ फाइन देनी चाहिए। और अगर ये ऑटोज अगर इनका पता नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे जीएचएमसी एरिया में और थोड़े से रक्शे या ऑटोज कुछ नए दीजिए जिम्मेदार बनाकर, ताकि वो घरों से कचरा उठाकर उसमें सफाई करें। और आखिर में मैं मिनिस्टर साहब से ये दरखास्त करूंगा कि हम बार बार एक मुतालबा कर रहे हैं, फिर से उस मुतालबे को दोहराना चाहता हूं कि नोटराइज डॉक्यूमेंट का रेगुलराइजेशन का एक बहुत बड़ा मसला है जो पुराने शहर का है। इसको जल्द अज जल्द आप अगर हल करेंगे तो कई गरीब खुश हो जाएंगे, दुआ देंगे कि उनके नोटराइज डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी अपील करूंगा आपसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स काफी म्युनिसिपालिटीज में हैं, कॉरपोरेशंस में हैं, चाहे वो संगारेड्डी हो, जहीराबाद हो, या फिर मेदक हो, या फिर आदिलाबाद हो, या फिर टांडूर हो, या फिर करीमनगर हो, नलगुंडा हो, खम्मम हो, यलंदू हो, बोधन हो, यहां पे है। और हमारे कॉरपोरेटर्स के वार्ड्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से टीआरएस के लोग और दूसरे वार्ड्स को डेवलप किया जा रहा है, एमआईएम के कॉरपोरेटर्स जहां हैं उन वार्ड्स को भी डेवलप करेंगे, उनको भी साथ में लेकर इसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से हमको आप काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, गोइंग नाउ on energy, sir. So the transformation of Telangana for being a power deficit state to power surplus state has been quick and fast. The state is now the only state in the country providing 24/7 quality power supply to all the sectors and free power to the farming sector. The installed capacity has nearly tripled from 7,778 megawatts in June 2014 to 18,453 megawatts now, sir. Sir, as a result, the per capita electricity consumption has increased from 1,356 units in 2014 and 15 to 2,1256 units in 21-22. The per capita consumption of electricity in the country is 1,255 units. Telangana per capita consumption is 69% higher than the national average, sir. So there are 1.74 crore electricity connections in the state, out of which 72.14% are domestic connections, 15.49% are agricultural connections, and 12.35% are industrial connections and others, sir. Telangana is the only state supplying 24 hours free power supply to 26.96 lakh agricultural consumers from 2014 to 15 to 2021-22, sir. The Hyderabad district has the highest number of domestic connections, 17.72 lakhs, and industrial connections another 4.16 lakh, whereas the higher number of agricultural connections was in Vanpatri district with 2.19 lakhs, sir. Sir, I would request the Energy Minister Saab to review the Transco and Southern Discom work in progress in Hyderabad metropolitan area, especially in old city of Hyderabad, and ensure that these works are implemented faster to ensure quality and reliable power supply in the state capital, sir. Sir, a very important
point or very important issue I'm raising, sir. And I want the Honorable Minister Saab to please clarify on this, sir. So some of the political leaders are blaming South Zone of Old City. Continuously they are blaming. और बार बार ये बात कहते हैं कि हुकूमत को हिम्मत नहीं है पुराने शहर में जाने के लिए, पुराने शहर में पावर की चोरी हो रही है, पुराने शहर में पावर के चोरी हो रही है। मैं हुकूमत से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ बैठकर रिव्यू किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 95% कलेक्शन है जो सप्लाई हो रहा है, पुराने शहर में कहीं पर भी चोरी नहीं हो रही है, पुराने शहर को बदनाम किया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप जब रिप्लाई दे रहे हैं तो आप वाजे कर दें, साफ कर दें, क्लियर कर दें और बता दें कि क्या पुराने शहर में चोरी है। अगर वाकई में अगर चोरी हो रही है तो मैं वादा करता हूं हम ठहर कर आपकी जितनी भी चोरी है उसको खत्म करेंगे और बराबर पैसा आपको दिलाएंगे। हम इस बात को कतई नहीं मानते कि पुराने शहर में चोरी हो रही है, सर। सर ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, उसके साथ ही साथ सर वी नीड टू रिप्लेस 11 kV 185 square mm UG cable of feeder lines from Kandikal Gate substation to Naseeb Nagar, Phulbagh, Patel Nagar, Rakshapuram, Kandikal Gate, etc. The present cable was damaged with 20 joints in each cable, sir. 20 joints each cable mein. Present electrical transformers are overloaded, sir. Sir, need to enhance their capacity. Most of the electrical station should be bifurcated, sir, and circuits to be created in old city area, sir. Existing sections services are overburdened with 30,000, 60,000 services. What is the norm saying, sir? The norm is saying one section should have 12,000 to 15,000 services only. And this has been done in new city. के 12,000 से 15,000 सर्विसेज, लेकिन ओल्ड सिटी के एरिया में 60,000, 50,000 सर्विसेज आर देयर. So I request through you, Honorable Deputy Speaker, sir, to the Minister Sahab to kindly look into this, sir. Example, Chandrangutta, in one section, 42,000 services. Miralam section, 55,000 services. Chandulal Baradari section, 48,000 services. Attapur section, 58,000, sir. Sir, existing transformers capacity should be enhanced, sir. Replaced with 160 kVA, 160 to 315 kVA, 315 to 500 kVA. On 100 kVA transformers can bear only 70 to 80 kVA load of services, but here the services are overloaded, sir. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 11 kV feeder should be bifurcated, sir. One feeder can bear 25 to 30 transformers, sir. One feeder can bear 25 to 30 transformers, but here existing feeders are overloaded. Example are the areas Omar Colony, Naseeb Nagar, Rakshapuram, Keshagiri, Riyasat Nagar, Mohin Bagh. Feeders frequently trip and uninterrupted in power supply, sir. याकुतपुरे में भी कई जगह पर ट्रिप हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है. मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे. LT air bunch 70 square mm cable not provided since last 1 year in old city area, sir. In a small street passing through high tension, low tension overhead line need to be replaced, sir. Sir, ये रिप्लेसमेंट नहीं होने की वजह से 2 इंसिडेंट्स हुए हैं साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में. एक बेचारों की पूरी दुकान जल गई, सर. मैं आपसे अदबन दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कलेक्टर के जरिए और पुलिस की रिपोर्ट मंगाकर इंक्वायरी कराकर कुछ तो भी पैसा उनको दीजिए साहब. वो रोड पर आ गया है, रोज रो रहा है. वायर्स हिलकर शॉर्ट होकर उसकी दुकान रात में जल गई साहब. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको देखेंगे. मेंटेनेंस स्टाफ स्ट्रेंथ टू बी इनहैंस, द सेम नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग सिंस लास्ट 10 years, sir. So also we request that one separate electrical division in Falaknuma from the existing Charminar division should be created, sir. Need bifurcation of section, subdivision, 3 section, 1 subdivision, 1 AD plus section staff, and division D, 3 ADs and 9 AEs plus staff.
only the system can run smoothly without complaint if this is created, sir. So the new city sections are bifurcated and made small section are norms, but in old city not yet done, sir. So I request that to take up this, sir. And also, sir, there are many other issues which I have already discussed. The most important thing which I would like to bring to the kind notice and make a request to the government is, electricity consumers have urged the state government to save them from the additional burden of advance consumption demand, ACDs, the charges imposed by the power utilities. Sir, various decisions taken by the union government has made public life tough, sir. Like prices of LPG, petrol, diesel have gone up. Recession is high, sir. Mehengai बढ़ रही है. The demonetization and hurriedly implementation of GST have added to the problems of the poor people, sir. तो मैं आपसे request करूंगा, sir. ACD charges have come as a further burden, sir. इसके ऊपर संजीदगी से आप गौर करिए और गौर करते हुए काफी तफसीलें में जाना नहीं चाहता, सिर्फ यही आपसे मुतालबा करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, sir. Please conclude. Sir, yes, sir. Yes, sir. I'll just, 10-15 minutes. I'll just finish, sir. Fast, sir. Sir, labor and employment, sir. TRS now, BRS has made poor promises at the time of assembly elections, 2018, to provide unemployment allowance. I once again make a request, kindly rethink और ये अलाउंस के ताल्लुक से कुछ गौर करिए, क्योंकि jobless youth, women are waiting for the unemployment dole for more than 4 years, sir. Sir, मैं ये भी आपसे कहूंगा, sir, कि there are about 9 lakh jobless youth registered with employment exchange in the state. Also, another 25 lakh educated youth have registered themselves with Telangana State Public Service Commission as part of one-time e-registration facility. I would request the Labour and Employment Minister Saab to give details of number of jobless youth in the state who would be eligible for employment dole scheme, sir. आप दे सकते हैं, आपके पास सारी तफसीलात हैं. I would request that on par with the boys and men, girls and women who have completed their education but could not get jobs should be paid an unemployment allowance, sir. Sir, Telangana Overseas Manpower Company is non-functional, sir. Sir, I may recall that government has started Telangana Overseas Manpower Company in the year 2015 to facilitate the recruitment of state youth for jobs in Gulf countries, sir. The main purpose of starting the corporation was to save the youth from the unauthorized private placement agencies and recruitment के नाम पे जो धोखा देते हैं उनसे बचाने के लिए बनाया गया था. But the Overseas Manpower Company is almost non-functional, and the cases of cheating of jobless youth by the unauthorized agents and sub-agents continue. So kindly look into that, sir. Administration and religious endowment के ताल्लुक से मैं फिर से मेरी बात दोहराऊंगा और हमारे शहर के मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्टर साहब आप हम मीटिंग करते हैं, लाल दरवाजे के मंदिर वालों को बुलाते हैं और इसका काम जल्द अज जल्द कुछ शुरू करवाते हैं. मिनिस्टर साहब आप टाइम दीजिए, सारे लोग बेचैन हैं आपके लिए. और फिर उसके साथ साथ ये मंडपम के लिए भी 2 मनादिर में मंजूरी दी गई है, उस काम को भी तेजी पैदा करने के लिए थोड़ा मैं श्रीनिवास यादव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप इस पर देखें. फॉरेस्ट एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में मैं हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर से यही कहूंगा कि तेलंगाना को Harita Haram was launched in 2015 and 16. Under this program, extensive plantation activities have been taken up inside and outside of the notified forest area to increase the forest density and assist natural regeneration through water harvesting structures also, sir. As on 22-23, as many as 14,965 nurseries have been established and 270.65 crore saplings have been planted with an impressive 117.68% achievement rate as against the target of 230 crore plantation with an incurred expenditure of 10,417 crores. To create more lung space for citizens, the government has proposed to develop 109 urban forest parks, of which 77 has been completed and 60 made available for general public. Out of 109 urban forest park, 59 are in HMDA jurisdiction. A green corridor has also been developed through
in intensive plantation of 71.15 lakh seedlings along 158-kilometer outer ring road and interchange of 457.23 acres. Due to these initiatives, Hyderabad has been recognized as the Tree City of the World 2021 by Arbor Day Foundation and the Food Agriculture Organization FAO of the United Nations for the second consecutive year, sir. मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को इसके लिए. In addition to this, Hyderabad has also been honored with the World Green City Award for the year 2022 at the International Association of Horticulture Producer AIPS 2022 organized in Jeju, South Korea. The city has also been awarded in the category Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth, sir. मैं इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं मिनिस्टर साहब को और मैं अदबन दरखास्त करूंगा कि पुराने शहर में जू है, एक मर्तबा कुछ वक्त निकालकर मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि हमारे साथ चलिए, हम जू का दौरा करते हैं. एक जमाने में दुनिया के बेहतरीन जूओं में हमारे हैदराबाद का जू था, आज भी हमारा जू है. उनके कई मसाइल हैं, अगर आप वक्त देंगे तो हम जू को जाएंगे और जू के जितने लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे. बहुत सारे उनके मसाइल हैं, छोटे छोटे हैं, अगर वो कर देंगे तो जू और अच्छा हो जाएगा. हजारों लोग जू को आते हैं और मैंने केटी रामाराव साहब के साथ मीटिंग की थी तो उस वक्त भी मुर्गवानी डियर पार्क के ताल्लुक से कहा था. मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप हम उस पार्क में भी जाते हैं साहब, उसको भी डेवलप करते हैं डियर पार्क को, तो इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और फिर हम लोगों को आने के लिए कह सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जस्टिस में the lower judiciary in the state comprise civil court, criminal court, special court, etc. But there are large number of vacancies in this court, sir. I request the government to ensure that all the vacant posts of the magistrates, civil judges and other rank of judicial officers are filled up so that these courts function without any hassle and the cases are disposed of faster, sir. Sir, finally coming to my conclusion on the education, sir. So, the Telangana government has allocated rupees 19,093 crores for education, which amounts to 6.57% of total outlay of 2,090.936 crores. The budgetary allocation for the sector have been falling every year, sir, year after year since the current Bharat Rashtra Samiti government assumed power in 2014, sir. Sir, as the budgetary share of education sector dips in Telangana year after year, the state manifesto fails to comply with the recommendation of Kothari Commission, which suggested 30% of budget to be earmarked towards education, sir. Even in 2023 fiscal, Telangana spent 6.24% of its total budget on education, which is much lower than all India average allocation of 15.2% as per 2021-22 budget estimates, sir. Sir, about Manauru, Manabadi scheme, which was announced last year, received just 299 crores, and I believe more now they would be getting the money. So kindly I request that कि सर ये प्रोग्राम के लिए मनाउरू मनाबंडी और मनाबडी में ज्यादा पैसे दीजिए ताकि स्कूल्स का काम लिया जा सके. In first phase, 9,123 schools have been taken up with an estimate budget of 3,497 crores. Whereafter a year less than 10% budget release and work finalized for only 600 schools. Residential school catered. Sir, we talk about our important, Honorable Deputy Speaker, sir. I was going through the demands and I did my research work. And as per my findings, if I am wrong, I may be corrected for this. Sir, government schools, residential schools में जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी तादाद अगर हम देखते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट, एससी वेलफेयर, बीसी माइनॉरिटी वेलफेयर अगर हम देखते हैं तो 7,26,000 स्टूडेंट्स है सर रेजिडेंशियल स्कूल्स में सर. और डे स्कॉलर्स अगर हम देखते हैं, डे स्कॉलर्स सर, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 28,96,000 है और प्राइवेट स्कूल्स में 30 लाख है. तो ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर,
We are doing wonderful work as far as residential schools are concerned. 7,26,000. But we are not doing that sort of a work for 29 lakh students who are studying as day scholars in the schools. This is very important. This needs to be have an attention of the government, sir. Sir, इसमें इतने ज्यादा वैकेंसीज हैं. अगर हम देखते हैं सर, टोटल स्कूल्स इन तेलंगाना गवर्नमेंट एमपीपी और जेडपीपी के सर 26,072, TRIES 35, मॉडल स्कूल्स 195, KGBV 475, URS 31, एडेड 670, टोटल 27,477 सर. तो अब टोटल टीचर्स पोस्ट आर 1,24,162 और उसके बाद वर्किंग is 1,04,053. Vacant posts are 20,109. That is 16%, sir. So non-teaching post sanction 7,710. Working is 5,747. Vacant are 1,963. 25% is vacant, sir. Sir, no lecturers have been recruited since last 10 years in Telangana state universities. In the year 2017, notification was issued to fill 1,061 posts in university, but due to court cases, the process has been stopped, sir. Now, in the last session, Telangana Assembly has passed Telangana Common Recruitment Board Bill, would be holding recruitment to teaching and non-teaching posts in 15 universities, stating that appointment will be made as per the guidelines issued by UGC, done under this board, sir. Sir, but the Raj Bhavan continues to delay giving or not to Telangana University's Common Recruitment Board Bill for the last 5 months. Sir, through you, I want to make a request to Honorable Governor Sahiba. Please, ये बिल को क्लियर कर दीजिए. इससे तकलीफ हो रही है. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी तकलीफ हो रही है. क्लियर कर दीजिए गवर्नर साहिबा. इससे मासूम बच्चों का नुकसान हो रहा है. और ड्यू टू दिस स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस 15 यूनिवर्सिटीज आर सफरिंग lack of qualified and permanent teaching staff, sir. Like polytechnic colleges, sir, number of institutions are 56. Sanctioned post is 1,675. Working are 868. Vacant are 807. Vacant are 807, sir. That is, the vacancy is 48%. Junior colleges, 407 institutes are there. Sanctioned are 6,656. Working are 985. Vacant, sir. Vacant. Deputy Speaker साहब आप सुनिए. Vacant कितने? 5,671 posts are vacant. 85% is vacancy, sir. Sir, if we go to degree colleges, 132 degree colleges are there. Sanctioned posts are 4,376. Working are 1,320. The vacant posts are 3,056. That is again 70%. I know, आप थोड़े से लेक्चर्स को अपॉइंट करके उनसे काम ले रहे हैं, चल रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है उसमें. यूनिवर्सिटीज 11, सैंक्शन 2,798, वर्किंग 906, vacant posts are 1,892. That is again 68% of vacancies, sir. So the total number of vacancies in polytechnic, junior college, degree college and universities, and the total number of institutes are 606, sanctions are 15,505, working are 4,079, and total vacancies 11,426. Non-teaching को भी अगर हम देखते हैं, sir, again it is the same, sir. Polytechnic, junior, degree and universities, non-teaching, sir, the sanction post is 10,596, working is 5,124, vacant is 5,472. Sir, so many times in past assembly session, I have raised this. In just an implementation of GO number 162 was released on November 2017 for self-finance 69 Urdu junior lecturers, sir. इनकी फाइल पेंडिंग है, इसको क्लियर कर दीजिए सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा. सर, as per GO 162, they were appointed as contract lecturers, but Board of Intermediate appoint them as guest and neglect the GO number 162, sir. So I request that this may be corrected, sir. उर्दू पोस्ट DSC के बारे में भी मैंने पहले भी कहा है, फिर से दोहराता हूं. टीचर्स प्रमोशन के ताल्लुक से कहना चाहता हूं, ओल्ड सिटी के स्कूल्स बहुत खराब हैं
Honorable Deputy Speaker, sir, through you, I request the Honorable Minister Sahiba कि अगर पुराने शहर के स्कूल्स को अगर कोई एनजीओ आता है अडॉप्ट करने के लिए, तो काइंडली आप ऐसा कुछ बनाइए कि एडॉप्शन हो सके. Right now, when I go forward and I make a request, I want to adopt this school, they are not allowing us. Kindly see that wherever, if any NGO or any organization come forward for adoption, they may be given an opportunity to adopt and improve the school, sir. About 1,000 above residential schools are in Telangana, sir. बहुत अच्छे चल रहे हैं. इसका मैं खैर मुकदम करता हूं. और फिर से सर मैं मुतालबा करूंगा वो स्पाउस के ताल्लुक से, जियो 317 के ताल्लुक से मैं उम्मीद करूंगा कि मिनिस्टर साहिबा और हुकूमत संजीदगी के साथ इस पर गौर करेगी. और ये सारे मसाइल मैं उठाया हूं जितनी मुझसे कोशिश थी. और डिप्टी स्पीकर साहब, एक मुतालबा हमने पहले असेंबली में भी किया था, लास्ट ईयर भी केटी रामाराव साहब थे, उस वक्त बोले थे, मिनिस्टर साहिबा भी थी कि बहादुरपुरा एरिया में जूनियर कॉलेज नहीं है मैडम. तो हमने कहा था कि आईटीआई का जो है वहां पे जमीन पर एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज देने के लिए हमने फलकनुमा कैंपस के ताल्लुक से कहा था. चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग डिलैपिलेटेड कंडीशन में है, नए बिल्डिंग की मंजूरी आपने दी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम आपका. नई बिल्डिंग की तामीर शुरू हो जाएगी चंचलगुड़ा में. और फलकनुमा कैंपस के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा से, मिनिस्टर साहिबा से, कि आप एक वक्त निकालकर अगर एक छोटी सी मीटिंग हमारे साथ कर लेंगे तो ये सारे मसाइल हम आपकी तवज्जो को ला सकते हैं. मैं जानता हूं कि आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, सारे मसाइल तो हल नहीं होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा. मैं उम्मीद करता हूं डिप्टी स्पीकर साहब कि जितने मसाइल हम उठाए हैं इस पे हुकूमत संजीदगी इसके साथ गौर करेगी. और फिर से मैं केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक तवील मीटिंग के जरिए पुराने शहर की तरक्की का एक रोड मैप को मंजूरी दी है और आने वाले कल का भी एक रोड मैप बनाया है. इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका डिप्टी स्पीकर साहब के मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए भी आपका शुक्रिया.